Hey, I hope you are all doing great. And I'm here to start a new series where I'll be diving deep into Web3 and just getting my hands dirty in blockchain technologies. So, yeah, this is a beginner friendly series where I'll be learning new stuff related to Web3, how blockchain works and how we can interact with them. So, रोज मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँगा जो मैं सीखूंगा जिसके बारे में डिस्कस करूंगा कि आज मैंने ये सीखा हाउ डिड आई इम्प्लीमेंटेड इट टू मेक समथिंग सो या टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट सॉलिडिटी सॉलिडिटी क्या है सॉलिडिटी इज अ C++ बेस्ड लैंग्वेज where you can make smart contracts and which can be deployed on Ethereum blockchain. So yeah, आज मैंने सिंटैक्स सीखा उसका कैसे होता है क्या होता है एंड क्या चीज़ें उसमें लिखी जाती है हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट टू मेक अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. So yeah, there's an amazing YouTube channel that I found, which I'm following currently. Wait, मेरा कैमरा कहाँ गया? Just give me a minute. Yeah, here I am. इधर नीचे. So yeah, I'm talking about this amazing YouTube channel. डैप यूनिवर्सिटी नाम है. इस पे ये वाली प्लेलिस्ट है. यहाँ पे पूरा ये इसने दे रखा है. शुरू से मैंने सुबह लेके बैठा and yeah, I completed this course which gave me a good knowledge about क्या syntax रहता है like the data variables structures क्या होता है and how to implement arrays mapping loops if else जो भी program basic प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है वो मालूम पड़ गया एंड इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ कैसे पेमेंट्स के साथ और ट्रांजैक्शंस के साथ कैसे ये इंटरेक्ट करता है वो भी इस कोर्स से पूरा मालूम पड़ गया from which I made not a project I will not say थोड़े से हैंड्स ऑन के लिए ये रिमिक्स आईडी है which is available online on the browser where you can write solidity code and smart contract and also it can be deployed on a testnet basically एक मेन मार्केट अलग से होता है एंड जहाँ पे एक्चुअल लिक्विडिटी रहती है इथेरियम की जहाँ एक्चुअल पैसों में ट्रांजेक्शन होता है एंड देयर इज अ टेस्टनेट फॉर डेवलपर्स where developers can test their smart contracts and test that code कि भाई सब बढ़िया चल रहा हो सब. So yeah, I learned the syntax and how to write a smart contract. What are the optimal ways to write a contract? So yeah, today I made a hotel room contract which is pretty simple, where we have statuses whether a room is vacant or occupied. So yeah, we can and who is the owner. So owner is basically the person who made this contract. So it will be stored as an address is one kind of a variable type जैसे string integer होता है. Address is also a variable type in solidity which can only contain the public address the of any person or any user. In this case it's owner. So yeah, we construct the contract like whenever it will be deployed, it will be initialized by the owner as the person who has deployed the contract. So yeah, message dot sender means जिसने वो ट्रांजैक्शन करा है. In this case ट्रांजैक्शन हुआ कब है जब वो डिप्लॉय हुआ है on the blockchain. And when I'm saying deploying, it's getting deployed on the blockchain, like the actual Ethereum blockchain. Not here because this is a test net. So ये अपना अलग से डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाता है इसके अंदर एंड उसके अंदर फिर ये डिप्लॉय करता है. एंड जो करंट स्टेटस है उसको अभी के लिए वीकेंड हमने इनिशियलाइज कर दिया एंड दिस इज अ इवेंट ऑक्यूपाई जो कि यहाँ पे कहीं पे कॉल होगा उस पर हम आते हैं बाद में. मॉडिफायर ऐसा समझ लो कि एक टाइप का मिडल वेयर होता है. कोई भी चीज़ से पहले अगर तुम्हें ये कुछ चेक्स पास करवाना है तो तुम मॉडिफायर डाल सकते हो. जैसे इसके पहले मैंने यहाँ लगाया है. अब ये क्या है मैं उसकी थोड़ी बात कर लेता हूँ. रिसीव करके एक फंक्शन है. रिसीव के अंदर मतलब जब भी आपके पास ट्रांजैक्शन कोई भी आएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा. अब इसके पहले मैंने कॉस्ट लगाया है कि जो भी ट्रांजैक्शन आया है. अब ट्रांजैक्शन किस में आएगा? पैसे में नहीं आएगा. इट विल बी टोकन्स. टोकन कैसा रहेगा कि इथेरियम टोकन है. इस केस में तो इथेरियम टोकन है. ओके सो वो चेक कर रहा है कि अगर जो मैसेज डॉट वैल्यू मतलब जो ट्रांजैक्शन आया है क्या वो अमाउंट जो मैं दूंगा आर्ग्यूमेंट में उससे ज़्यादा है. अगर
उससे ज़्यादा नहीं है तो उसको ऐसा सिंपली बोल देना है कि दिस इज़ नॉट इनफ इथेरियम, और ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा या फिर उसका रूम ऑक्यूपाई नहीं होगा। सो या यहाँ पे मैंने डाल रखा है कि अगर करंट स्टेटस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, सो यू नो यू कैन मेक एनी बुक एनी रूम। सो या करंट स्टेटस को फिर चेंज कर देगा अगर वेकेंट होगा और पैसे भी मतलब इथेरियम भी सफिशिएंट होंगे तो। एंड ओनर ट्रांसफर, ओनर डॉट ट्रांसफर मैसेज वैल्यू मतलब कि जो मैसेज मतलब जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें जो वैल्यू आई है, वैल्यू मतलब कितने टोकन्स, वो ओनर को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो या एंड यहाँ जो मैंने ऊपर इवेंट बनाया था ऑक्यूपाई करके, वो इवेंट यहाँ कॉल हो जाएगा, लाइक इट विल एमिट द इवेंट। So yeah, that's the pretty. I know it's a pretty basic, not even 30 lines of Solidity code. Okay, so this was the code. Now we'll try to deploy it and actually run it. मैंने पहले किया था तो पहले उसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम कंपाइल कर सकते हैं अपना कोड। जो वन इट्स बिन कंपाइल्ड, वी कैन सेट द एनवायरनमेंट फ्रॉम हियर, जो है अभी के लिए वही रख देते हैं। एंड these are the sample accounts which remix id gives us, through which we can select and make transaction। obviously 100 ETH तो बहुत ज़्यादा होते हैं, so these are just sample accounts and sample ethereum। okay, so now we'll deploy it, and a contract, this part is called the contract, and now it's been deployed, and this is what it shows. Now let's test it। okay, now it's time for the testing। इग्नोर दीज, ये पहले का है नहीं, ये जो अभी डिप्लॉय करा उसका मैसेज आया। ठीक है, इसमें बहुत सारा डेटा होता है, लाइक इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ डेटा। व्हाट द स्टेटस, नॉट द स्टेटस that I have initialized here, it's the status of the transaction, and this is a transaction hash, you can copy it and paste in some website of the Ethereum where you can track कि क्या block number है, what's the status and all। this is the block hash, the block in which the transaction has been stored, and the block number, that block has a unique number, and this is a contract address, and every contract has an address from which it can be read or write with. Not write, we can't, we can't write in any blockchain's block, it can only be read। so yeah, this is the from, like कहाँ से transfer हुआ है, and the to where it has been transferred। so yeah, there's a lot of data, there's a lot of jargon out here। this is the main output where we can interact with the contract। there is this owner button, if I'll click this I'll get the data currently क्या है। this is the nothing, it's like it's showing the current status of the contract। now we'll try to book a room। okay, I'll make a transaction to make to change the state, or make some changes in the contract, you have to make a transaction। so let's just first try to transact one Ethereum, and here I have given the argument that the cost should be greater than or equal than 2। so if I try to make a transaction with one Ethereum, let's try this, it will get failed and it will give me a message that not enough Ethereum। so yeah, भाई की गरीब यहाँ से चले जाओ। मैं कहा okay, I'll come back with more money, I will do the transaction, it will get successfully, yeah, the transaction will be successful, and the output would be hotel room, yes, hmm. execution has been succeeded, yes। now if I'll try to make another transaction, it will be failed. Why it's zero, nothing, wait, it will get failed. Why? Because the room has been already been occupied। see, we have this one condition that if it is already occupied, then you have to throw an error which says, bro, it's currently occupied, you have to come later। so yeah, that's our basic contract for day one, but that's a fresh starter for me। I learned the syntax and what are the type of variables that are used,
how it interacts with the Ethereum blockchain, and how you can use it to make smart contracts which can be deployed on Web3 applications. So yeah, that's my idea. इसके पीछे भी बहुत कुछ होता है, मैंने देखा था इसका prerequisites की, how blockchain works, what is the main idea of Ethereum blockchain, what is the main idea of uh, Bitcoin blockchain. So yeah, tomorrow we're gonna deep into dive deep more into Solidity. Like, this is just one 30 lines of code that I wrote today. Kal, I'll be making a more secure and more optimized smart contract, which will be related to bank and actual transactions. So yeah, stick together, and I hope you'll enjoy this series.